this is Rabiata. Hi guys, what's up? This is Rabiata here, and you are listening to the Brown Girl Rants. Today is a very special episode because we have a very special guest, and this is the second time in the history of the Brown Girl Rants that we are having a guest in the podcast who is physically present with me right now. The guest being my little sister Iqra, who just came back from her college. We are not video recording, so you don't have to like make that face. Anyways, she just came back from her college after giving her last exam, and I dragged her in. I said, oh, I need some spice in the podcast and you need to be here. So hopefully the podcast would not be boring, and we would talk about a lot of interesting stuff and how it is to have me as a elder sister. So assalamu alaikum. What's up, Ikra? बोलो हंस लो पहले. वालेकुम अस्सलाम. How are you? Alhamdulillah. Ikra, you need to be a little closer to the mic. Okay. So I just made chow mein for you today. Yes. How do it feels to have a elder sister like me who just makes everything you want to have? I feel very privileged and I feel very nice because I can just demand things and I get them delivered on a platter. Okay. So, what was I going to talk about? How was your exam? Okay, एक minute. Let me interview her a little bit and then we'll go back in. This is not an interview. We need to be in a conversation. So you need to like be a human and normal, like we have a conversation. Okay. So how was your paper like? Okay, Spark Studies का पहले पेपर हुआ था and it was more easier and it was I don't know but क्योंकि वो पहले हुआ था मुझे लगता है वो मेरा ज़्यादा अच्छा हुआ. लेकिन कुरान असल में ये है कि मेरा जो अरेबिक वाला पार्ट था वो थोड़ा सा रह गया बिकॉज अरेबिक थी और मुझे वो आती नहीं थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी कुरानिक वर्स को गलत लिखूं उसका ट्रांसलेशन वगैरह, तो मैंने छोड़ दिया. इस वजह से मुझे लगता है मेरा, क्योंकि मैंने पाक स्टडीज़ का पेपर पूरा अटेम्प्ट किया था, इसलिए मुझे लगता है मेरा ज़्यादा अच्छा हुआ. ओह यस. तो तुम्हें क्यों नहीं आती थी उसकी ट्रांसलेशन? क्योंकि मुझे अरबी नहीं आती. तो टीचर ने सिखाई नहीं, वो सिर्फ पढ़ के चली जाती है. हमें खुद पढ़ना पड़ता है. Can you tell us what you are currently studying and in which college you are enrolled? Okay, I am enrolled in KIPS College, Gulbarg campus, and I'm doing ICS, which is like computer science and mathematics. So, are you enjoying what you are doing? I'm not maybe I would have enjoyed it in other college more, because in this college I think so we will speak about it later, but I don't enjoy doing ICS in this college, though ICS is very fun, but here the education and teachers are not that good. I kind of agree with that, even though I'm not in KIPS college, but I have studied from Punjab college, and I think Punjab college is like a far better than KIPS college. Do you agree with that? Yes. You have friends in Punjab college. What they talk about? Oh, I was talking to a friend of mine, Ramin, a few days ago, and she's in Punjab college, and she told me कि उनका भी वैसे रोज टेस्ट होता है, बट उनका किप्स कॉलेज की तरह ही है कि आप क्लास से अगर आपने निकलना है तो हर जो है फ्लोर पे गार्ड होता है, वॉशरूम जो तो वहाँ पे आया बैठी होती है जो आपको घूरी होती है, तो वो आपको फोर्सफुली क्लास में भेज ही देते हैं वापस. So it's not like you can't bunk in Punjab college. So you can't like take a breath and वहाँ भी वो कह रही थी कि वीकली टेस्ट होते हैं. So you wanted to go to a college जहाँ पे party शार्टी होती है, you can bunk classes and just not study at all. Yes. But I actually think, क्योंकि I had friends who were in Kinna college and Lahore college, and in those college you can like easily skip classes whenever you want. There's no one who is like, you are not accountable to anyone. But at the same time, I think that kills your university experience, because FSC is really important and it's more important than metric. Do you agree with that?
यस, और जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लेना था तो हमारा मेरा मेन गोल ऑब्वियसली यही था कि मैं किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लूँ जहाँ पे मुझे आगे अकेडमी ना जाना पड़े। और यही था कि अगर मैं अपने स्कूल के कॉलेज, क्रेसेंट कॉलेज या फिर कोई ऐसे लाहौर या पंजाब कॉलेज में जाती, मुझे आगे अकेडमी करनी पड़ती। पहले तो क्लासेस लेनी नहीं थी उन कॉलेजेस में, तो समझ तो आना कुछ था नहीं, और आगे फिर रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ना था। आई थिंक सो इट्स नाइस कि एक ही जगह जाके Yeah, it's काम nice होता है। because obviously it is hard, but once you go in university, you need to like save that experience, that bunking and skipping class experience उस तब के लिए। और उस टाइम पे मुझे लगता है कि देयर इज जस्ट सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यू नो कि यू इस लेक्चर की सिर्फ 2 क्लासेस होनी हफ्ते में, तो यू योर सेल्फ डोंट वांट टू स्किप इट, और इफ़ यू डू लाइक दैट्स अप टू यू, नो वन इज लाइक gonna ask you, not even your family. I will obviously, like it's like you can bunk, like at the same time you have this responsibility because you know you won't be able to like understand that concept really well. So that's the backdrop. Like, are you excited for your university? I think you are. Yes, I am very excited. Is Are you excited because I had fun in university, so you are expecting the same for you, or you're just interested because you have seen all these like high school and college like movies and you want to experience that drama in your life? नो, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली मैं जैसे बुक्स में पढ़ती या फिर मैं देखा हुआ भी है तुम्हें जाते हुए यूनिवर्सिटी। मुझे लगता है इट विल बी अ फन एक्सपीरियंस। पहले जब मैं 6 या 5 में थी, जब यूनिवर्सिटी हमारी फैमिली में से सबसे पहले रबी आई गई है, तो इट वाज लाइक पहले मैं देखती भी थी You तो were मुझे not in sixth that time. You were? आई वाज मैं जब 5th में थी, तो 5th और 6th में थी जब मैं, तब तुम कॉलेज में थी, मेरी 7th में तुम यूनिवर्सिटी Yeah. में गई थी। तो हाँ, तो मैं 5th या 6th क्लास में थी, तब मैं देखती थी कि जो है ऐसे यूनिवर्सिटी है एंड एवरीवन इज एंजॉयिंग, और सब यही कहते थे ना, इंटरमीडिएट कर लो यूनिवर्सिटी में तो मजा है। सो But at the same That's time, it. for me, it was like when I entered in the university, I actually did not knew how the things are. I actually got lost in my university on my first day. But you have a little exposure of university because you have Actually. gone to university with me. So that environment excites you? Because obviously you have seen university. You haven't seen university maybe on regular days, or you have maybe, but there's a certain environment in university, and every university have that. 'Cause there's a lot of kids in the cafeteria. There's something happening. Are you into that environment? I personally really enjoyed that. Yes. So you're not an introvert. Would you call yourself an introvert? I think you do, but I don't think you're an introvert. I do only when it comes to like talking about feelings and stuff. मुझे अच्छा नहीं लगता कि But feelings I के बारे think में। okay, but I think you're a very extroverted person and you have nice social skills because you have a lot of online friends as well. But on online is different. Online is different. Online you can like But also pretend to be someone. But also you talk to them on phone Yeah. really well and you're काफी connected with them. Yes, I do talk to them, and वो वो जिनके साथ मैं बात करती हूँ, दे आर मोस्टली वो लोग जो मतलब दे आर माई वाइब, दे आर ऑल देसी। मैं किसी ऐसे अमेरिकन या किसी और से ऐसे बात नहीं करती। मैं जिनसे बात करती हूँ या तो इंडिया के हैं या पाकिस्तान के हैं, सो दे लाइक वाइब मैच होती है उनके साथ। मुझे नहीं लगता मैं उनके अभी अभी कोई मेरी अमेरिकन फ्रेंड होगी या कुछ ऐसे होगा तो मैं उसके साथ ऐसे ही बात कर सकूंगी जैसे। So do you get intimidated by people if you see someone who is like acting superior, who maybe have better marks or are really good looking, or belong to a society that is like upper class? So do you get intimidated by them if you see someone is acting really superior? Yes. You do? Yes. So are you afraid to meet those kind of people in university? Because for me, I think I have the friends I made in university are pretty much like me. Like there's no such thing. So, but with you, I think you have made friends that sometimes are not like your vibe. They are different, but you somehow
or do you think that kind of friendship lasts longer, or do you need to have like same type of boundaries? But at some point there are friends, just with me and my university friends, we have like same reservation, same boundaries, और कभी कभी हम कहीं पे नहीं जा सकते, या हमारे पेरेंट्स एक जैसे हैं, माहौल घर का एक जैसा है. Do you think that makes a friendship long last longer then even if you have a friend जिसका आपके घर से बहुत डिफरेंट माहौल है, लेकिन still you can be like friends with them? नहीं, मुझे लगता है सेम वाइब इसके साथ ज़्यादा होता है. जैसे अभी भी मेरी फ्रेंड्स हैं जो जिनके साथ मेरा घर का माहौल भी थोड़ा सिमिलर है और सब कुछ, उनके साथ मेरे ऑब्वियसली ज़्यादा आई कैन बी माई सेल्फ अराउंड देम. और जैसे कुछ दो, जैसे मेरा पुराना भी मतलब जो फ्रेंडशिप ग्रुप होता था, देयर लाइक उनमें उसमें ऐसे चलती थी कि मतलब मैं किसी के घर के माहौल के बारे में ऑब्वियसली बात नहीं करूंगी. कॉलेज में बंदा कुछ और होता है, घर पे कुछ और, मतलब गालियां वगैरह थी. तो मैं कहती थी मतलब, और मैं कभी नहीं देती थी, कभी आदत ही नहीं थी. लेकिन जो मेरा दूसरा ग्रुप है वो उसमें ऐसा नहीं है. सो तो मैं उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि हाँ बेशक मुझे उन सारी गालियों वगैरह का सब कुछ पता है. आई डोंट वांट टू यूज देम. बेशक हम दोस्त हैं. So that's your reservation कि we don't use curse word in friendships and all. So with the friends that matches your vibe, are you comfortable to मतलब कि say them, oh we can't go there, I can't afford it, या फिर जो है oh my parents won't allow me to go there, and do you think they understand that? क्योंकि I think it's really important for your friends to understand that. And I am asking you this because I think when you will be in university, you will meet a lot of people, and if your friends are not understanding these basic things, I don't think they're it. What do you have to say about it? हाँ, लाइक जैसे मैं भी कह रही थी, जो मेरा एक ग्रुप है और भी मेरा जो मेरा एक्स ग्रुप था और जो मेरा करंट ग्रुप है, तो अब जो मेरा करंट ग्रुप है तो उनके साथ मैं बता सकती हूँ कि यार पैसे नहीं है यार, मम्मा नहीं आने देंगे. हालांकि उनका घर मेरे कितना पास है, ये बिल्कुल 5-10 मिनट्स की वॉक पे है, लेकिन फिर भी मैं उनको मना कर सकती हूँ. और दूसरों को मुझे मना करते हुए आई फील लिटिल हेजिडेंट कि यार ये क्या सोचेंगे, या फिर क्या जज भी कि इसको कोई छोड़ने वाला नहीं है, इसके घर वाले इसको बंद करके रखा हुआ है. So our goal is to stay away from those people and to meet people who you think understand you in university as well. Because मुझे लगता है कि university में you are 80% of the time with your friends and 20% of the time in lecture. Even with lecture you're with your friends. तो मुझे लगता है it's very important कि जो दोस्त हों आपके, they really understand you, because it would be uncomfortable for you and you will end up doing things that you don't want to do at first place. Okay, that is my advice to you. Okay, now you have been with my friend circle as well. You are very much into the thing is that with Iqra is so deep into my friend circle. Like there's this point where I cannot go anywhere without bringing her, because everyone is like, oh bring Iqra. It was my friend's wedding, she was with me. Like every single group with my friends, with my school friends, maybe she's not that in, but when they came over to my home, because one of my friends have a sister that is same age as you and you guys are childhood friends, so she was still in it. But with my two groups of university, Iqra is really into them. So do you like my friends better than your friends? Oh, obviously. मुझे लगता है मुझे लगता है कि रबिया के मैं फ्रेंड्स से जब पहली दफ़ा मिली एंड एवरीथिंग, मुझे था यार मैं तो अपने से बड़े लोगों से ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, मेरी तो तबीयत ही बड़ों वाली है. लेकिन अब मैं कॉलेज में हूँ ना, तो हमारी वैन में भी है जूनियर्स आते हैं, तो मैं उनके साथ मतलब करी होती हूँ. फिर मैं कहती हूँ नहीं यार मेरी वाइब थोड़ा मेरे से छोटों वालों के साथ ज़्यादा मिलती है. अब मुझे ऐसा लगता है बड़ों के साथ तब मुझे तुम्हारे ग्रुप के साथ मज़ा आता है, बट आई एम नॉट लाइक कि मैं उनसे बात वगैरह करती हूँ, या मतलब करती हूँ लेकिन फॉर फनसीज. हाँ, मतलब वो मजाक कर रहे होते हैं, मैं बस बैठ के देख रही होती हूँ, एंजॉय कर रही होती हूँ. बट ऑल्सो दे एंजॉय योर कंपनी अ लॉट because they want you to be there and you to be with me. But I think does it help, even if you were the eldest one in this family, then would it have been that comfortable for you to hang out with older people? Because abhi to kyunki even though we have a 5-year age difference,
but we are almost like the same. We know the same things, we are watching the same things. So मतलब कि it's not like you can be with the person who is the same age as mine because you have a sister of that age, like you know the shit you can talk about. तो मुझे लगता है कि with the thing, people who are like younger than you already know what they're going through, so you can like advise them, you can relate to what they're saying. Okay, so all of this started because I always wanted to go out, and I knew I couldn't go alone, so I would always bring Iqra with me, and it was all she would always be a little like ticket for me. And even if we are like going home late, my parents would be like satisfied, our parents would be satisfied कि वो Ikra is with her. So but then she was so fun. तो मुझे देख के डर जाना ना, रबिया को नहीं उठाना Ikra. नहीं, it's just that कि for me, I don't know what goes on in their head. For me it's like, oh, I'm bringing her in, and it's like कि बस मतलब chill scene है. लेकिन with Ikra, लेकिन she came once and then she came twice and then she kept coming, और मतलब कि now it's like सेंचुरी होने वाली है. अब से मतलब कि अब it's very chill. So लेकिन I don't have that bond with her friends. I would love to have it, लेकिन it's always like they're very small to me, and I'm like, let the girls have their time. Maybe with her university friends, maybe I will go to her festival. I kept taking Ikra to Quali nights. Or Ikra, are you grateful for that? How's Quali night? Like, how is the experience? Like, I really like क्वाली. मुझे वैसे क्वालियों का इतना शौक नहीं है, लेकिन इट वाज नाइस क्योंकि फिर जब मैं पहली दफ़ा गई थी ना, तो मुझे बहुत VIP ट्रीटमेंट मिला था क्योंकि मैं पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी आई थी, और एवरीवन वाज लाइक, ओह इकरा की बहन है रबिया, इकरा की बहन रबिया की बहन है, और सबने वो मुझे आगे बिठाया था बिल्कुल कॉल के साथ. तीनों दफा ही आगे बैठी थी. तीनों दफा, लेकिन पहली दफा की बात करिए ना. मुझे जो है वो यू आल्सो हैड स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक रबिया की दो साथियों ने लाख पिलाया था, और जो है मुझे कर रहे थे कि इकरा को साथ रखना. अच्छा, एक गाड़ी जा रही है यूनिवर्सिटी और कोई लेने आया, चलो इकरा को साथ ले लेते हैं, इसको साथ साथ रखेंगे यार, कहीं जाने इकरा को ले लेते हैं, वो भी देख लेगी. सो इट वाज वेरी नाइस. और फिर कॉली में ऑब्वियसली रबिया होस्ट कर रही होती थी. मैं So you were like, oh, that's my sister. That's my sister. Achha, anyways, let's just talk about your university. What university do you want to go in? Are there any dreams? ओके, सो मेरे एक जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू है यूनिवर्सिटीज़, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जैसे वो UCP वगैरह के बारे में है ना, कि ये तो टिकटॉक UL, UCP, नहीं सिर्फ UMT, UCP, UMT और सुपीरियर, इनके बारे में तो मुझे मशहूर है ना कि टिकटॉकर्स की यूनिवर्सिटी है. So I personally don't like that because boys call that thing. तो मुझे लगता है कि मतलब कि UCP वैसे is a great university. They have really good like काम वगैरह, लेकिन it's okay. I think you're in college, so I know okay why would people say that. लेकिन हाँ, तो अच्छा तुमने मुझे भी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना था because they don't have greenery. I was like, oh my god, I need field area. मुझे obviously मेरा स्कूल था वो काफी अच्छा बड़ा था, लेकिन अच्छा I said literally the same thing in my college के ना, हमारा स्कूल बहुत बड़ा था, ये कि डब्बी कॉलेज है, लेकिन हमारा कॉलेज बहुत छोटा है. कॉलेज बहुत छोटा है, तो मुझे था अब मैं कोई बड़ी यूनिवर्सिटी. तो do you think about going to ComSats? Do you want to? Do you think you would be like comfortable going to ComSats? You would like easily gel in. Also, you know people there. मेरा वैसे कॉमसेट्स पहले नहीं, जब फर्स्ट ईयर तक मेरा टारगेट नहीं था कॉमसेट्स, बिकॉज मुझे था कि मैंने पहले इंटरनेशनलाइजेशन करना था, जो कि अब मैं काफ़ी एम्बैरेस्ड हूँ जितनी हद तक मैं पागल थी उस चीज़ के पीछे. लेकिन पहले अब मुझे जो है थोड़ा सा है, कॉमसेट्स इज़ अ ग्रेट यूनिवर्सिटी. मुझे कॉमसेट्स अगर जो मैंने प्रोग्राम करना है वो अगर कॉमसेट्स मुझे लगता है इस साल से वो करा रहे हैं इंट्रोड्यूस. लेकिन मुझे ये भी है कि अगर पहली दफ़ा किसी चीज़ की क्लासेस हो रही है, मैं पहले बैच में होंगी, टीचर कैसे होंगे, ये वो हमारे करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं,
ठीक है, लेकिन वो उनसे मैंने सवाल पूछा तो कहते हैं कोई यूनिवर्सिटी वाला पागल थोड़ी ना होता, वो एक इंट्रोड्यूस चीज करा रहे हैं, टीचर वो अच्छी रखेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। वो टीचर वही रखेंगे जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं, क्योंकि इवन दो मतलब कि शायद स्पेशलाइजेशन के लिए डिफरेंट टीचर ले हैं, लेकिन मोस्टली वही टीचर होंगे जो ऑलरेडी वहाँ पे, और जो वो जो टीचर हायर भी कर रहे होंगे दे वुड हैव सम एक्सपीरियंस। हाँ ऑब्वियसली, लेकिन लाइक बीइंग द फर्स्ट बैच इज काइंड ऑफ इंटिमिडेटिंग, या इट्स स्केरी। और फिर यूनिवर्सिटीज, मुझे आईटीयू, मुझे इन लोगों ने कहा, लेकिन मुझे उसका यही था, मुझे फास्ट नहीं जाना। मैंने दिमाग में सोच रखा हुआ है मुझे फास्ट नहीं व्हाई नॉट फास्ट, बिकॉज मुझे लगता है फास्ट में कोई यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं है। मैं मतलब गलत भी हो सकती हूँ, ओके दिस इज जस्ट मी। और मुझे लगता है कि वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा पढ़ाई होती है। आई वांट टू, मतलब अच्छी बात है पढ़ाई, like join societies no I don't want to join societies। मैं sit back and enjoy वाला बनना चाहती हूँ। लेकिन I think it's fun being the famous girl also, because I have been that in my last year. It was so fun. Maybe I will be, because कॉलेज में इन फर्स्ट ईयर मैं बहुत अभी तक हूँ, लाइक इन माई क्लास मतलब FSC वगैरह नॉट पॉपुलर, लेकिन मुझे सब कहते वो मतलब एक CR की सैश थी ना, तो वो सारे कहते थे कि सबको होता था हाँ वो ICS की रेड सैश वाली CR, हाँ जिसके छोटे बाल हैं, और अभी भी मुझे सारे ये कहते हैं हाँ छोटे बाल। you like attention? नो मुझे नो, लेकिन आई डोंट लाइक अटेंशन। मुझे लगता है कि मैं अटेंशन मुझे मिलती है तो मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाती हूँ। हम एक सेकंड फनी बात, हम एक दफ़ा वैन में आ रहे थे और हमारी जो जूनियर्स हैं उनमें से एक है वेरी स्वीट, वो बहुत अच्छी है, और वो उसने कहा, हम सारे बैठे हुए थे, हालांकि उसने सबको कंपेयर किया जो के, लेकिन उसने कहा कि जो है ना मुझे वैन में सबसे ज़्यादा इकरा पसंद है, और मैं लाल पीली हो गई। मैं मतलब मेरा दिल चाह था मैं छलांग मार दूं। मुझे कॉम्प्लीमेंट्स लेने नहीं आते, मुझे अटेंशन मतलब उसको मैनेज करना नहीं आता कि अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला है, अच्छा ठीक है थैंक यू वगैरह को मैं अपने मुंह हाथ में मुंह दफन करके जो है बैठ गई। Oh, it must be hard living like that. Rich people problem. लेकिन मुझे नहीं आई डोंट लाइक बॉयज गोइंग अराउंड मी। Okay. Yes. Okay, so you don't want to be popular in university? I want to be popular. अच्छा, let's just go I back. want people to know कि मतलब अच्छा I want to be popular के इंटेलिजेंस या sarcasm के बारे में, not like कि किसी और चीज में। अच्छा, anyways. So what university do you want to go? अभी तक मैं because GC वो मेरा Do you have a dream university? Just let me know that. Or you just want to go to a university जिसमें campus life हो? Because concerts really have a good campus life. GC में काफी अच्छी कैंपस लाइफ है मुझे लगता है, लेकिन अब बात ये है कि वो यूनिवर्सिटी वो चीज कराती नहीं जो मैं करना चाहती हूँ, वो ऑफर ही नहीं करती प्रोग्राम, तो मैं कैसे जाऊँ। और जो जिसमें यूनिवर्सिटी जैसे फास्ट या ITU है उसमें अगर मतलब ऐसे नहीं है, मतलब एक कैंपस इतना बड़ा या फिर ऐसी यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं है, लेकिन वो अगर करा रही है तो आई डोंट नो विच वन टू डिसाइड। क्योंकि मैं ऑब्वियसली ये बात है कि अच्छा चलो अच्छी, मुझे लगता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी बहुत मैटर करती है और अच्छा CGP है, तो अगर मतलब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ वाली चूज करती हूँ, लेकिन बाद में फिर मैं सर पकड़ के बैठी हूँ 4 साल बाद, वो एंजॉय तो कर लिया, अब जॉब कौन देगा, तो ये भी तो। लेकिन एट द सेम आई थिंक ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पीपल, ठीक है ना। इफ यू हैव गुड फ्रेंड्स, इफ यू हैव गुड पीपल अराउंड यू हु और जिनकी वाइब आपसे मैच होती है, तो ऑब्वियसली यू विल हैव फन। इवन इफ योर यूनिवर्सिटी इज ड्राई, यू कैन रियली जस्ट डू योर ओन थिंग एंड बी हैप्पी. Okay, let's just change the topic and talk about something else. You also have a lot of other interest. Would you like to, if you would introduce yourself to someone, what would you say? Who is Iqra? What does Iqra like? तो मतलब what is your personality like? ये सब कुछ बताओ. Tell me about your favorite characters, maybe your favorite shows or your hobbies. What do you like? And then we can talk about that एक एक करके. अच्छा, अगर कोई उनसे पहली दफ़ा मिल रहा है तो मैं उसको कहूँगी कि सबसे पहले मतलब ओके इंट्रोडक्शन कराया, और अगर ज़्यादा
ओके 18 years old, ये यहाँ रहती हूँ, सब कुछ ये पढ़ रही हूँ. उसके क्या उसके बाद मैं बताऊंगी कि आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. मैं ओके आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. ओके, इस पे बात करते हैं पहले. आई ऑल्सो रीड बुक्स, ठीक है, लेकिन our taste are actually very different, लेकिन it's okay. Who no is one's judging. who is you started off with reading fan fictions, मतलब there's no embarrassment in that. लेकिन मतलब कि you were more interested to read fan fiction first, is that true? नो बिकॉज मैंने पहले जब मैंने फर्स्ट बुक पढ़ी थी वो 2020 में कोरोना के टाइम्स पढ़ी थी. उसके बाद मैंने वॉटपैड ज्वाइन किया था. तो लेकिन मुझे लगता है कि एज अ बिगिनर वॉटपैड इज इजी टू रीड for you to get into reading, because ek to it's a story about your favorite characters. If you're reading a fan fiction, so it's about the people who you already like. ठीक है, तो it's just easy to get into it and you get आहिस्ता आहिस्ता get the attention span to read a novel of by an author. Do you agree? I guess. Anyways, acha, what's your favorite author and what's your favorite troupe and what are you currently reading? Quickly. My favorite author, I guess, is Ella Mace. I have my favorite book is by her, Married for One. My favorite read of 2023 was a book by her, Charlie Love and Cliches. And what I'm currently, I actually ended a book yesterday, the Wrong Mr. Right, and it was by Stephanie Archer, and it was really nice. I gave it 4 stars. It was romance. And my favorite troupe is Marriage of Convenience. Okay, so you really like rom-com. You're in your rom-com era. You also like thriller? I like thriller and I not rom-com. rom-com मैं तब पढ़ती हूँ जब मैंने कोई डार्क रोमांस बुक पढ़ी हो एंड आई एम लाइक ओ अब तो मैं बहुत डाउन हो गई हूँ, अब मुझे थोड़ा सा हाइप अप करने के लिए कोई बुक चाहिए, तो फिर मैं कोई rom-com पकड़ लेती हूँ. लेकिन मेरी फेवरेट बुक जैसे मैंने अभी बताया वो सारी यही है कि वो थोड़ी लाइट रोमांस एंड दे आर नॉट लाइक डार्क या फिर हैवी या फिर कोई ज़्यादा मार धाड़ वाली. So are you reading like slice of life? मतलब what's the genre you are currently vibing with? Or the author you really like, what genre she writes the most? Okay, so I really not really like Ella Mace. I mostly write contemporary romance. That was so hard to say. Contemporary romance, okay? And I think so I vibe the most with that. But I also read thriller books last year. A Good Girl's Guide to Murder, uski series bhi aa rahi hai, and it was really nice. I think so Holly Jackson writes a lot of good things. You have to read. A Good Girl's Guide to Murder. Okay, what do you think about my taste in books? I think so it's very old money aesthetic, dark academia, and vintage थोड़ा. I also really like Asian literature now. और थोड़ा वो जिसमें थोड़ी autumn vibes आपको आती है, like leaves crunching under the feet, वो सारा. Love that. Evermore. But I think you will get there too. I would love to. मुझे वो सानिया मेरी दोस्त है, वो मुझे वो mangas पढ़ती है. I think so they are like animation की books. Animation की books. And बहुत ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि mangas are not considered into reading. और कुछ लोग कहते हैं जैसे audio books कुछ लोग पढ़ते हैं that it is not considered into reading. और that annoys me a lot. I think any book that is on Goodreads is considered reading. Like even if you are reading your syllabus book, it's on Goodreads. नहीं it is reading. Like reading is reading. But मुझे लगता है कि audio books मतलब कि with audiobooks it's like listening, तो that's more like listening. जैसे मैं एक podcast, बहुत सी ऐसी podcast हैं जिसमें book पढ़ी जाती है या फिर book की story बताई जाती है,
तो आई थिंक अगर मैंने उसकी स्टोरी सुनी है, जैसे देयर इज दिस पॉडकास्ट बेकिंग अ मर्डर, उसमें फैंटेसी बुक्स की वो स्टोरीज बताती है, तो मुझे लगता है कि अगर मैंने कोई बुक वहाँ से सुनी है तो आई ऑलवेज से कि ओ या आई लिसन टू इट ऑन द पॉडकास्ट, आई नेवर से कि आई रेड द बुक, because that's not really reading. Like, you know the story but you're not, मुझे लगता है a reading experience is different than listening experience. Both are really good. I love listening as well. लेकिन I think it's kind of different. लेकिन if you are a really busy person or you have a lot of work to do जिसमें आपने जिसमें you don't need your mind, ठीक है, जैसे बर्तन धोना, अलमारी ठीक करना, ट्रैवलिंग करना, तो मुझे लगता है कि इफ यू डोंट हैव टाइम कि आप बुक खोल के पढ़ सको, तो ऑडियो बुक्स आर रियली गुड, दे कम रियली हैंडी. नो लेकिन ये भी तो है, अब जैसे अगर मैं पढ़ रही हूँ कोई चैप्टर, उसमें कोई डिटेल वाली बात, अब मैं एक काम कर रही हूँ और साथ में सुन रही हूँ, आई एम नॉट गिविंग इट दैट मच अटेंशन, तो अगर मैं कोई पार्ट मिस कर देती हूँ देन मैं मतलब रिवाइंड ऑब्वियसली कर सकती हूँ, लेकिन बट आई वांट गिव माई 100% टू दैट बुक. वो ऑथर ने इतने मुश्किल से मतलब लिखी है 4 साल लगा के, एंड आई एम लाइक नॉट इवन गिविंग इट. आई हेट व्हेन आई डोंट गिव अटेंशन टू बुक्स. मतलब बेशक बुरी बुक हो, लाइक किसी ने काम किया, मुझे उसको प्यार देना है जितना मैं दे सकती हूँ, हालांकि इफ आई हेट इट. अच्छा, तो मुझे लगता है कि फॉर यू, डू यू हेट बुक्स? Have you ever read any book that you really hate? Yes, I end up hating the books that are hyped the most, that are loved by internet. Any book that you read first and you were like, oh my god, masterpiece, but now you hate it so much? मुझे सोचना पड़ेगा इसमें. आई थिंक सो दिस स्पेनिश लव डिसेप्शन, वो एक टिकटॉक फेमस बुक थे. ओ इट एंड्स विद अस. इट एंड विद अस. इकरा also, when I was getting back into my book era, उस टाइम यूनिवर्सिटी में मैं थी और मेरा फाइनल सेमेस्टर था. इकरा was like, oh my god, you need to read it. So my first 2 books were from Colleen Hoover and then she gave me Seven Husbands of, some people really like Seven Husbands of Evelyn Hugo. Like, it's personally not my vibe. Like, I was not intrigued or I was not emotionally attached with that book enough. I didn't connect it to it enough. It End With Us. It End With Us is a very funny story. मेरी cousin है नूर, हमारी cousin है नूर, तो उसने मुझे कहा था It End With Us पढ़ो, और वो मैंने पढ़ी, और फिर वो बुक मेरे लिए मैंने वो पढ़ी, and then I instantly, मतलब मैं 15 years की थी, मुझे इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी और रेड फ्लैग्स का इतना कोई आइडिया नहीं था. आई वॉज जस्ट गेटिंग इनटू रीडिंग. I remember I was reading It Ends With Us and I said कि oh I like Atlas, and he was like, are you sick? क्योंकि मैंने जब वो बुक खत्म की तो वो मेरी दोस्त रामीन ने भी उस वक्त ली हुई थी, एंड आई वाज लाइक, मेरा उस वक्त मिशन बन गया था कि आई हेटेड इट सो मच. मुझे वो बुक मतलब 2-3 दिन बाद इतनी बुरी लगता है. फिर मैंने कहा कि जो है ना, मैं रविया और रामीन को पढ़ाऊंगी सो दैट लाइक दे कैन गो थ्रू द सेम थिंग. आई वाज लाइक evil. It wasn't like I loved it. So and then when I read Verity, so I said कि I hate the main lead characters and I really like the character of Verity. And you said you are twisted and you need to like get checked. Yes, you have to. Like her character was interesting. The main lead, yes. I was such a loser girl, and that guy Jeremy, he was so loser behavior था दोनों का. They were really red flags, or he literally cheated on his wife. So I don't know कि how, मतलब कि obviously she, मतलब कि Verity is a bad character, but she is witty and smart. हाँ, and interesting. It was interesting, लेकिन मुझे Verity इस वजह से अच्छी लगी थी because I was in my horror era that time. और वो एक सीन है जिसमें जो है Verity वो खड़ी होती है stairs में. अच्छा. I loved reading Verity as well. I need to read more horror thrillers because it's not that scary. A Good Girl's Guide to Bed. Is it horror? It's not horror, but it will get you hooked. लोगों उसकी जो third book है, everyone loved it the most because उसमें plot सबसे अच्छा है. But I loved the second book more because उसमें रवि और पिप के काफी जो है ना cute scenes है. मुझे second book वो पता नहीं क्यों ज्यादा अच्छी लगी थी, but that's okay. I'll add it in my good read. I'll add it in my good read का
Want to to read. read, want to read. Like, and I'm really into आजकल Asian literature. I love reading Korean and Japanese books. They're Oh, really- you should then read that book before the coffee gets cold. Okay. I heard about it. Okay. And I think so there's another book, Ikigai. I don't know. I think so. Okay, we'll see. Acha, next thing that you really like is F1 Formula Racing. Yes. How? Okay, इकरा ने मुझे ये बात कभी सच नहीं बताई, लेकिन she promised me she'll reveal it today. How you got into F1 racing? Do you got into it because you wanted to look cool? How you got into it? ओके सो मुझे F1 रेसिंग का पता था बिकॉज ट्विटर पे बात करते थे, बट आई ऑलवेज लुक्ड एट इट के लाइक अमीरों की चीज़ है, ठीक है, बिकॉज वो मतलब मेरी दोस्तें थी जो देखती थी और मतलब वो ड्राइवर वगैरह की वो लगाती थी एंड फिरारी एंड मर्सिडीज, और मैं कहती थी यार ये तो अमीर लोग हैं। और मुझे था कि मुझे कभी तक वो इतना इंट्रीग किया, लेकिन पिछले साल इन जून के भी नहीं, आई थिंक सो मई, आफ्टर माई एग्जाम्स मैं घर पे अकेली थी एंड मैं फॉर्मूला 1 मुझे नहीं पता था हमारे पास चैनल है, ठीक है, तो वो मैंने कहा ओ ये तो वो है तो मैंने वो लगाया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी एंड हेटेड द फैक्ट कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तो फिर मैंने एक जो है ना एक यूट्यूब वीडियो देखी, बिगिनर्स गाइड टू फार्मूला 1, तो फिर वो मैंने देखी और फिर जो है मुझे कुछ समझ फिर भी नहीं आई, और फिर मैंने अपनी दोस्त से पूछा एंड देन शी वाज लाइक वी, उसका नाम है वी, मतलब वी उसका निकनेम है ऑन ट्विटर, मैं उसको असल नाम नहीं पता। अच्छा। तो उसने उसको काफ़ी पसंद है एंड शी वाज अ फरारी फैन, तो जो है उसने मुझे और हमारी एक और फ्रेंड है बी डबल ए हनी बी तो I know both of them. यू नो ओके, सो उसने हमें कहा कि यू गाइस शुड वॉच इट, एंड फिर मैंने एक रेस देखी एंड देन उनकी समर ब्रेक आ गई, लेकिन समर ब्रेक के बीच में मैं ड्राइवर्स वगैरह को फॉलो करना शुरू हो गए, मुझे एडिट्स आना शुरू हो गए, सो आई जस्ट गॉट इनटू इट। So is it fun? Because it seems very boring to me. No, it's fun because like there are 10 teams and 20 drivers and everyone is like family, okay, so they have that very cute bond with each other, Like K-pop. yes, and everyone is like अगर किसी का on track beef भी चल रहा है, off track they are still besties, so it's not they keep Okay. it's not boring, it's like when you start watching it, when you know the drivers, when you know when you watch the interviews, when you know the strategy they are going for and everything, it's kind of interesting. Okay, so it's a sport, right? Okay, and I have seen people like मुझे लगता है आजकल it's very into fangirl over sports, like or to be in it, like there are so many cricket fans, especially in Pakistan, football fans. I think कि sports की जो fangirling होती है, it's as crazy if not more. नहीं, it's not more, लेकिन it's as crazy as fangirling over a K-pop group or a show or any pop culture icon. What do you think? हाँ सेम लोग अब जैसे ट्विटर पे बहुत सारे फार्मूला 1 फैंस हैं एंड एवरीवन इज लाइक, और मुझे लगता है कि मैं पहले जो है टर्किश शोज देखती थी और मतलब मैं उस फैंडम में भी थी एंड उसमें और मुझे फार्मूला 1 फैंडम में ये बहुत सिमिलैरिटी लगी कि आपको चलो एक फेवरेट है, ठीक है, उसके चक्कर में उसको डिफेंड करने के चक्कर में यू आर ब्रिंगिंग एवरीवन एल्स डाउन, ठीक है, अगर आप चलो एक पसंद है या कुछ भी है और फिर अगर आपको एक नहीं पसंद, आप अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना कमिट कर देते हो कि मैंने तो इस बंदे को हेट करना है, मैंने तो इस बंदे को ड्रैग करना है, उसकी पूरी फैंडम को मैंने ड्रैग करना है, और ऐसा नहीं है कि उस बंदी का जो फेव वो उसने कोई गलत काम ना किया हो, एवरीवन लाइक एवरी ड्राइवर मैंने सबका देखा हुआ है, किसी ने सेक्सिस्ट जोक मारा हुआ है, किसी ने एल्बिज्म को किया हुआ है, कोई रेसिस्ट है, कोई सबने कुछ ना कुछ कहा हुआ है, लेकिन
किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता। जब उनके फेव की बात आती है तो वो मतलब जो है ना बिल्कुल ब्लाइंड आई कर लेते हैं, लेकिन कोई कभी किसी और की बात आती है सो दे आर लाइक ऑल रेजिंग ऑन ट्विटर के ये तो भाई दैट्स रियली जस्ट लाइक द कोर ऑफ स्टैंड ट्विटर। जब बेशक आप पाकिस्तान स्टैंड ट्विटर कर लो, बेशक आप के पॉप स्टैंड ट्विटर कर लो, बेशक आप टर्किश शो के, मुझे लगता है कि हर फैंडम में यही होता है। लेकिन फॉर मी, cause I have my fair share in fangirling and you came after me cause you saw me के oh my god she uses Twitter, so I need to use it too, and then like me Twitter came a part of her life as well. बट मैंने जब तुमने तो 2014 में या 15 में बनाया था और मैंने 2020 में बनाया था। एक सेकंड 2020 में बनाया था, उस अकाउंट को मैंने 3 दिन बाद कर दिया और फिर मैंने एक और अकाउंट बनाया, उसको भी मैंने कर दिया और फिर ये मेरे 4th अटेम्प्ट थी ट्विटर अकाउंट बनाने की, क्योंकि मिसबा ने मुझे कहा था कि हम एक शो देखते थे साथ एंड शी वाज लाइक कि इसकी फैंडम ट्विटर पे बहुत अच्छी है, ट्विटर पे बहुत अच्छे एडिट्स हैं। व्हाट शो? यार्गी। ओके। तो वो उसको फिर हमने जो है कि लेकिन मैं ट्विटर पे आई, मतलब मैं उस शो कैसे देखती थी, उसकी एपिसोड आती थी संडे नाइट को और मैं अगले हफ्ते तक वेट करती थी कि मैं तब स्कूल में थी कि मैं सैटरडे की सुबह उठूंगी, नेट पैकेज लूंगी और वो मैं 2 घंटे की एपिसोड देखूंगी। लेकिन जब से मैंने ट्विटर ज्वाइन किया उस ट्विटर ने मेरे लिए वो शो इतना टॉक्सिक कर दिया कि फिर मैंने वो शो देखना ही छोड़ दिया। जिस चीज के लिए मैंने ट्विटर ज्वाइन किया मैंने उसको abandon कर दिया। Yeah, so you think sometime like fangirling and stan Twitter ruins your experience of watching a show. Sometimes 100%. you really love hyping up with people and screaming and having people to talk about it. But sometimes you just overanalyze things and you sometimes don't need to know other person's point of view. Right? Or मतलब कि मुझे लगता है कि a lot of people just forget कि we are here at first place to enjoy that show and we should stick to that. मुझे लगता है people take fangirling very seriously and I think I did that too. लेकिन I am still on Twitter, very much on Twitter. लेकिन now I just can't go, even if I'm watching a show, I just never can go to that level to make edits or to like stan them, even though I still get crazy over people or I do stan a lot of people. Like, and I can never go to that level because it's just bizarring and you just don't want to get into the negativity and find fights because it really affects you. Like, अगर आपकी ट्विटर पे भी कोई लड़ाई हो रही है और जिसपे आप किसी ने आपकी ना शक्ल देखी है ना ही किसी को आपका नाम पता है, still if someone is like आप किसी के साथ लड़ रहे हो उस पे और कोई they keep replying you get anxious. Yes. a lot, like it happens a lot कि मतलब मैं करती हूँ, मैं किसी का रिप्लाई पढ़ती हूँ कोई, मतलब obviously not everyone is supposed to love the person, the driver I love and everything, लेकिन फिर भी मैं पढ़ती हूँ, पहले तो मैं सोचती हूँ कि यार ये मतलब एक तो इसने टाइम निकाला मेरे लिए, बहुत अच्छी बात है, इसने कमेंट किया सब कुछ इतना इसने दिया, लेकिन मैं कहती हूँ यार लोग अपनी जुबान बंद क्यों नहीं कर सकते, मतलब अच्छा नहीं पसंद चुप करके बहन तुम स्क्रॉल डाउन कर लो, तुम्हें क्या है, क्यों मेरा दिन कर रही हो खराब. You have got into a lot of fights. Not on F1 fandom because F1 fandom में अब ऐसे है जैसे मैंने कहा हर किसी ने कुछ ना कुछ कहा हुआ है. I support them and like them. अभी तक मैंने सिर्फ एक एडिट बनाया है F1 का जब से मैं आई हूँ, and I like every driver as like. But you're not gonna go out of the way to like support them or हाँ, मतलब अब जब मैं ऐसे हूँ क्या कहते हैं, मैं ड्राइवर को सपोर्ट करें, I am supporting them as a sportsman. I am not gonna get into what type of person they are. मैं उनको इंस्टाग्राम पे हाँ फॉलो करती हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग टू नो कि उनके रिलेशनशिप क्या. एक जो है जैसे ड्राइवर्स की गर्लफ्रेंड वाइफ है उनको F1 में वैग कहते हैं, तो पूरा वैग ड्रामा भी है. That's such a bad word to call WAG. Very bad word. Wags. They should call them mistresses. Hi. No, so wags कहते हैं, तो I don't want to get into wag drama because wag drama है उसने उसके साथ देखा, उसने उस पे चीट किया, like, और फिर वो सारा आपका एक्सपीरियंस बर्बाद कर देता है कि आप रेस देख रहे हो, आप उस ड्राइवर को देख रहे हो, आप कह रहे हो हाँ इसको तो ठुक जाना चाहिए, इसने अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर चीट किया था, वैसे उसको ठुक जाना चाहिए. उसको ठुक जाना चाहिए, रेड फ्लैग.
yeah, like it is like sometimes you watch something and just total ruins the experience for you. लेकिन और But I मुझे still like, but लेकिन people पता क्या है, when you're watching something ना as a viewer, you're just concerned and you're just concentrated on the thing that is on TV. You just don't think about it beyond that. When you are fangirling someone and you're joining a social media platform to fangirl someone, so you just know more about that person, that celebrity or that artist or any or that player that casual watcher should know. So that is the cost of you getting to know more about that person. So acha, what else? Okay, you like, okay, what's your favorite car or company and whatever Formula racing? I started watching it as a Ferrari fan, but I now like everyone because everyone is nice and sweet. But when I have to like stand someone, Who you root for in a race? Mercedes. Okay. What else do you like? I don't enjoy cooking. I only enjoy cooking instant noodles and baking. you like Every goes wrong. baking? No, I don't like baking because from the past two times everything went wrong when I baked. But it's okay. That's the part of experience. You like cleaning more or do you like cooking more? Like, what's the house chore that you enjoy? I think so cleaning, but while I'm cleaning, I'm like imagining things. I'm like, and when I'm cooking, I'm having an Instagram live and 1 million people are watching me. Because that's what I think about. Okay. I tell them everything. My Okay, imaginary audience. Okay. So, you're not gonna have time to do all of this in your university time, because even when I was in my university, I literally stopped using Twitter at all. Like, I did not had the time. Also, university drama is so fulfilling. You just don't need to watch any other show, or but you just need to, matlab, it's not fulfilling, like, and it's spicy and it's juicy. You just need to like keep the thing in mind that you need to stay away from the drama. Like, you just don't want to be part of that. And we'll have a more like this detailed podcast about that once you are in the university and or Next year. once you are joining in, so I can give you a lot of advices and it would be good. Like next year, nahi isi saal. Oh, oh. Scary. Acha. Like 5 months. I guess. Yeah, लेकिन you just, मुझे लगता है कि with इकरा, because I have seen, मुझे लगता है कि इकरा, you have gone through a lot of friendship breakups as well, or I really have not. Even with my school friends, we are really close now and we have connected again, और वो सब कुछ है. So I think I would love to hear what, मतलब के, not in this podcast because we are like wrapping it up now. Like, and I would love to hear what's your perspective, and I can tell you in that you can have a better friendship in your university time. But okay, we talked about books, we talked about F1 racing. Do you watch any other content? Do you love watching any other content, or are you not watching movies or series आजकल? अच्छा, मैंने सोचा था, मैं कोई सीरीज नहीं देख सकती. मैं मूवी, मैंने आई थिंक सो लास्ट मूवी हमने होम लोन देखी थी, और वो भी मैं बड़ी मुश्किल से 2-3 घंटे बैठ ही रही, बिकॉज आई फील लाइक के अब जब से मैं सोशल मीडिया. Also, you don't really watch YouTube now as well. Yes, मुझे लगता है कि मैं कुछ अब मैं ड्रामा भी टर्किश कोई देखती थी ना, मतलब वो 2 घंटे का ड्रामा होता था, मैं उसको आधे घंटे या 20 मिनट में ख़त्म कर देती थी. मुझे अब ऐसे मुझे लगता है मुझे ना ये शोज़ वगैरह के साथ कमिटमेंट इश्यूज़ हैं कि मतलब मैं चलो 4 एपिसोड जैसे विंसेंजो के साथ भी है, मैंने 10 एपिसोड्स देखी हुई हैं, बाकी वो वैसे ही पड़ा हुआ है. We can watch it together. Once you're done with your exams, we'll watch it on TV. It would be so much fun. Yes, but मुझे लगता है कि I can't sit straight through series and everything. I get bored very easily. I think the problem is that for me, I have never binge watched. So if with a Turkish show or a Korean show have a 1.5 hour episode, so I watch it in 3 sittings. मैं half an hour से ज़्यादा नहीं देखी. और अगर light गई हो, then तो I do not have anything else to do. So then having an episode downloaded, it's like a good thing and you can watch it that time. लेकिन वैसे you're not into shows anymore. I think once you get into university, you would not be, and then you will come back once you are
I think so. done. Watching shows is very time consuming. I Okay. can read a book in that time. Okay, now let me know. Okay, is there something that I do that you don't like, or you want like for yourself? You will be like, okay, that's her choice, but I do not want that for myself. I don't think मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा. I just can't be like ये बात But है. you said that about my remote job. Yes, वो पहले था. Now I don't want to travel the world. I just want to sit in a blanket. But I don't think having a job, you get to travel the world by having a corporate not travel job. the world. I mean, Go places. फाटक तक जाना. But Also, like, मुझे लगता है कि you currently do not have the experience of like going alone, मतलब traveling alone that I have. Like, and at the same time, even though when I was of your age, I was you have a lot of experience. तुम स्पीडो पे आती जाती थी college. हाँ, लेकिन I would be scared to send you alone. Like, I would literally go with you and then drop you off, then come back and then pick you up. Like, I get scared. Do you think, oh, if you have to go alone, you can go alone? Or are you scared about it as well? Because even when I was like 7, 8, I would go academy. Academy तो तुम भी खुद चली जाती थी, right? वो Standard नहीं मम्मा छोड़ के. Oh, so Ikra, मतलब I think I get it, cause I am babied. yeah, I get it. Like, even you were 18. लेकिन हमारे साथ हमाद भी तो होता था. Sometimes I wouldn't be there, so I would go alone. Okay, मतलब I started going alone when I was like 14. It's scary. मुझे लगता है कि मतलब यूनिवर्सिटी भी मुझे लगता है कि मैं 2-3 हफ्ते या कुछ ऐसे महीने मुझे लगेंगे तब तक मैं चाहूंगी कि कोई मुझे छोड़े या पिक एंड ड्रॉप करे, बेशक मैंने किसी स्टॉप पे भी आना हो, बिकॉज आई कांट. But I think it's so liberating to go by yourself, and you would definitely enjoy it once you're in it. It's just scary to walk by yourself. लेकिन you मतलब with the area we currently मतलब मुझे लगता है कि it's not with the area. मुझे लगता है मैंने ये बात मतलब पहले नहीं मतलब की भी. ऑब्वियसली हमारा अल्लाह पे ट्रस्ट है कि वो हमें सब कुछ सही कर देगा, बट मुझे बहुत ट्रस्ट इश्यूज है. मुझे मतलब कोई बंदा सामने से गुजर रहा होता है मुझे लगता that है would happen to me too. Like, when I was in Punjab college, so I had to like go through this road, और उसमें I used to be really 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 scared जब तक main road आ नहीं जाती थी. और मुझे लगता है कि you just मतलब have to put in trust, और आयतुल कुर्सी पढ़नी पड़ती है. It's gonna be fine. It's just scary to be in the middle of the road where there'll be a lot of men and you're like, oh my god, like what to do, like you're clueless. Like, and now do you feel secure when you're with me? Because there's been many times when you have been with me and मतलब कि हमार नहीं होता साथ, सिर्फ मैं होती हूँ. I think so. I do feel secure with you, and मुझे लगे मम्मा पापा के साथ इतना नहीं होता, because मम्मा पापा. You think you have to take care of them? Yes, मतलब मुझे जैसे रोड क्रॉस करनी है, पापा को तो रोड क्रॉस करने से बहुत डर लगता है ना. आई एम लाइक फिर मुझे हिम्मत पकड़नी पड़ती है. या फिर कभी मम्मा है तो वो चल रही हैं, तो अगर उनके मतलब उन्होंने बैग पहना हुआ है कुछ भी है, तो मेरी उस पर नज़र होती है क्योंकि मुझे लगता है कि अभी किसी ने गुजरना है और कुछ लेके चला जाना, तो मतलब मुझे तीसरी आँख रखनी पड़ती है. Okay, so do you like being like do you like being the leader, not being the leader, like, and do you like being मतलब do you like having a little control, or do you like being in the control? I think so. No one likes being controlled. But No. I think since I like to get मतलब मुझे कोई बता दे कि मैंने क्या करना है, मैं वो करके अपना पार्ट दे दूंगी ये. बट आई एम ऑल्सो आई थिंक सो आई हैव अ वेरी डिसीजन मेकिंग पावर है, लेकिन नॉट विद लाइक फैमिली एंड स्टफ, बिकॉज फैमिली में मैं हमेशा से छोटी रही हूँ, एंड मतलब मुझे ऐसे वो डिसीजन मेकिंग मेरे उतना मुझे नहीं ऑब्वियसली दिया गया. मुझे हमेशा बताया, मतलब
मतलब अब तुम भी हो, लेकिन तुम अब बड़ी होगी, अब तुमसे पूछा जाता है, मेरा भी पॉइंट आएगा जब मुझसे पूछा जाएगा, लेकिन अभी तक मुझे वो ऐसे लीडरशिप और वो मतलब वो ऐसे पावर कभी फील नहीं हुई. सो आई एम लाइक मोर लाइक अच्छा मुझे बता दो मैंने क्या करना है, मैं अपनी तरफ से कर लूंगी, अल्लाह हाफिज बाकी. Okay, so do you think that I am controlling? Be honest. I think I am a little bit. I think so. You are, but in a good way. I think कि every elder sibling is controlling because मतलब कि they're just used to that or they want that. लेकिन a lot of people look at me और क्योंकि I show you a lot on my podcast and my stories, but I don't do that the same with Hamad, obviously. So everyone thinks I am like the younger one in the elder one in the family. Or when they get shocked when they get to know कि no, I'm the middle child. But if you look at your friends, like university friends, जैसे आए भी थे, everyone thinks that I control you more. Like राबिया भी कह रही थी, सादिया भी कह रही थी, कल अंकल भी आए थे ना, वो भी ये कह रहे थे. तो वो सबको लगता है बिकॉज मैं छोटी हूँ और मैंने रबिया को, अब मुझे एक पॉइंट आ गया जहाँ पे मैं रबिया को यार यार लगी रहती हूँ. मुझे लगता है एक पॉइंट आएगा मैं रबिया को तू तो कहना शुरू हो जाऊंगी. मैंने कभी इसको आपी वगैरह नहीं कहा, जाके लोग अपनी दो बड़ी बहनों को आपी, 2 साल बड़ी बहनों को आपी कहते हैं सब कुछ. तो you're 5 years younger than me. या सो मुझे लगता है कि रबिया के साथ काफी, मुझे लगता है मेरी थोड़ी दादियों वाली तबीयत है, ये कुछ करी होगी, शी वुड बी लेटिंग हर इंट्रूसिव थॉट्स विन एंड आई बी लाइक क्या कर रही हो, हाथ हटाओ अपना, या फिर ये कोई चिलाकी कर रही है. That makes it equal. We will मुझे लगता है कि since the podcast is already like of an hour or so we'll talk about the younger and elder sister thing कभी और like लेकिन yeah that's it. We'll put a situation, ठीक है, so कि ये छोटा भाई बहन इसमें क्या करेगी, what you would do as a yeah okay. So I would like to wrap this podcast up. Thank you so much for joining. I hope you enjoy the one holiday you have after your send up, and we wish you, the Brown Girl Rants nation wishes you very best of luck for your future adventures. Eventers, is it called eventers? Adventures. मुझे लगता है ओके, मुझे लगता है कि रविया अपडेट करती रहेगी what I would do in future. लेकिन yeah, but you can follow her. Do you have a public account? No, I don't. You can follow her on her Twitter account. You can follow the Brown Girl Rants और फिर मैं ये post करती रहती हूँ. But you can also follow her on Twitter. What's your at? It's the so extra girl. Or she have blocked me on Twitter. Do you guys know that? No, I haven't. मैंने okay, I did. बिकॉज पहले मैं बहुत क्रिंज ट्वीट करती थी, ये मुझे उस पर मॉक करती थी, लाइक मैंने तो इसको दिखाना भी नहीं है, नाउ मैं ट्वीट, अब मैं तुम्हें अनब्लॉक कर दूंगी. लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हें अनब्लॉक करने के लिए खोला और वो लिखा हुआ था यू आर ब्लॉक्ड बाय रबिया. Because if I can't see your tweets, then why would you have the privilege to see my tweets? Because you can see the tweets. How can you block me when I'm already blocking you? I can. You can? Yeah. Oh. Mutual block. I can unblock you if you want to. No, I think so. It's okay. I don't tweet a lot now because I'm more. I had your notifications on. So उससे क्या होता है? तब तो मुझे हम कुछ भी ट्वीट करती थी, या फिर हमारी फर्स्ट ईयर में मुझे याद है मैं कॉलेज से आई थी, हमारी लड़ाई हुई थी और फिर यू ट्वीटेड के जो है इट्स नॉट फेयर टू रूइन समवन्स डे इफ यू हैड अ बैड डे एंड न्यू इट वाज अबाउट मी, और फिर मैंने वो ट्वीट रीट्वीट की थी. वैसे your Twitter is open on my laptop, so I can really just open it any time. F1 drivers और मैं book quotes ही post करती हूँ. But anyways, that's Iqra and thank you so much for joining. 6 दिन बात ना करना. बहुत बातें हो गई हैं. मुझसे बात करना. 6 दिन. अच्छा, anyways, this was the episode of Brown Girl Rants. I hope you guys enjoyed, or I'll see you guys. Give your reviews, yeah. Ideas. Maybe there's a lot of friends of yours that are listening to it. उनको कोई message देना है? I told them in van कि मैंने कहा कि मेरी बहन की ऐसी podcast है, उसमें आज मैं करूँगी, वो कल एपिसोड अपलोड करेगी, मैं तुम लोगों को लिंक भेजूंगी सारे. Post it on your story and on your Twitter account as well, okay? Okay. और उनसे कहना सुनते रहें, because I am really fun. And they were like, मुझे एक दो ने पूछा था कि वो किस बारे में करती है, तो मैंने कहा वो कल जो मेरे साथ आएगी ना वो तुम लोग सुन लेना,
तुम लोगों को अंदाजा हो जाएगा, बाकी आगे की और पीछे की तुम लोग सुनते Yeah, रहना. once again, she do personal journal. They like my podcast. Okay. They were like अच्छा मैंने उनसे पूछा what they prefer to listen. They were like हमें थोड़ा वो brown girl relatable experience ही सुनना है. Yeah, okay. So that's Okay, advice let for them you. know. Okay, light nahi aayi, I don't know. We are like filming this, recording this andhere kamre mein because light was gone and I wanted to like get this done with. So really excited now. I have to edit it, or I'll see you guys next week. Thank you so much for listening to it. I love you guys so much. Hopefully मेरी YouTube video भी इस हफ्ते आ जाएगी. So follow me, subscribe to me on YouTube. It will be fun, and we'll ask Ikra to join us for the next YouTube. We'll मतलब do a You whole. see me on YouTube. Yeah. हेलो इकरा. Hi. नहीं इतना ऊंची नहीं. ऐसा बोलो. बोलो कुछ बोलो. कुछ अच्छा नहीं. Hello.